Good morning, everyone. Wish you all a very happy 70th Republic Day for today. And yes, ये वीडियो संडे को आने वाला है, तो इसलिए सभी को रिपब्लिक दिन की शुभकामनाएं. And let's start with our 2 minutes tutorial, Sunday tutorial. I'll try to wrap up before 2 minutes. So हमने लास्ट टाइम जो investing.com के टूल्स देखे थे, दैट वाज रिगार्डिंग लाइंस. सो ट्रेंड लाइन देखा था. अभी ट्रेंड एंगल देखते हैं. ट्रेंड एंगल इज़ नथिंग बट आपको ट्रेंड एंगल सेलेक्ट करके क्लिक करना है और फिर 0 से स्टार्ट होगा एंड यू कैन सी कितना ये ऊपर गया है. There is a 75 degree angle upside. Okay, this is one thing. So वापस लाइन के ऑप्शन में आएंगे. We'll go to another line, that is horizontal line, जो आप हमेशा मुझे देखते हो प्लेस करते हुए. को सिलेक्ट करनी है और क्लिक करना है. That's it, the line has been placed. लाइन का एवरेज चेंज कर सकते हो आप, छोटा बड़ा जो भी है. एंड ये डॉट से आप उसको ऊपर नीचे you can place it. Similarly, there is vertical line, horizontal ray स्टार्ट होती है प्राइस से लेके आप इसको कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हो. और अगर आपको इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट वाइट बॉल ये, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो. द अदर थिंग इन दिस इज वर्टिकल लाइन. जैसे मैं आपको कह ही रहा था, अगर आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना है, तो जैसे समझ लीजिए ये, तो आपको बस आके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है एंड आप उसकी साइज़ चेंज कर सकते हो. सो दिस इज़ सीएबल. तो आपको वर्टिकल लाइन पे क्लिक करना है. अगर आपको ये आगे लेना है तो सेम वाइट डॉट पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन मूव ऑन द चार्ट. सो दीज टूल्स आर डन. एंड उसके बाद है एरो इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाना है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉटम पकड़ते हैं रेड कैंडल का, मैंने क्लिक कर दिया एंड देन मैं अभी यहाँ से इसको यूज़ करके दिखा सकता हूँ कि यस, ये जो है दिस वाज अ अपवर्ड ट्रेंड. सो दिस इज़ हाउ एरो लाइन इज़ यूज्ड. नेक्स्ट is ray. Ray is again double dotted ray. I can plot here or on the chart or on the specific space. For example, let's pick this. Let's put it this way. तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बट येस, इफ़ यू आर वेरी मच इनटू टेक्निकल चार्ट एंड रीडिंग एंड टूल्स, यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. इसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ पैरेलल चैनल. नाउ दिस इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग बिकॉज आई विल शो यू. फॉर एग्जांपल, अगर आपको चैनल ब्रेकआउट फाइंड करना है तो वन हियर एंड द अदर वुड बी हियर. सो दिस इज़ हाउ. Parallel channel. इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है. Cancel. Now I don't know why is this not working.
मैंने इसको सिलेक्ट किया, पैरेलल चैनल, और ये चैनल हो गया सिलेक्ट। सो आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे एंड दिस इज हाउ you will place your channel on the chart. Very interesting, I like this. And after this I think flat top flat bottom is very important. For example अगर निफ्टी का अगर हम ये flat top flat bottom देखते हैं, so this is how you can find out flat top flat bottom. Nice. So I think we have covered all just disjoint angles. Now I don't remember the definition for this. Oh, nice, good. अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा तो मैं डेफिनेटली इसको मेरे वीडियोस में भी यूज़ करूँगा एंड यू कैन ऑल्सो डू इट. सो यस, 2 मिनट्स का कहा था, 6 मिनट्स का हो गया है, नो वरीज, बट येस व्हाट इम्पोर्टेंट इज लर्निंग. So guys, thank you so much for watching. Today I'll be dropping more 3 or at least 2 videos on different objects on this chart. So we have finally completed line. So do subscribe to the channel and keep watching. Thank you so much. Have a wonderful Sunday. Bye bye.